Welcome back students to online learning, Gyanmantra Vidyapeeth online education. I hope students that you all are fine and safe at your home. Students, in last video lecture we discussed about the poem from our main textbook Flamenco. The name of this poem is Keeping Quiet and the poet of this poem is Pablo Neruda. Students, from the title itself we can come to know about the theme, the central idea, the concept of this poem, that is to keep quiet. It is not only about the silence that is related to the words, but also it is about the quiet, it is about the peace that is related with our mind as well as our heart. Students, in the last video lecture we discussed the first portion, the first part of this poem. Let's have a brief glance of the portion. Students, in that portion, the first part of this poem, we discussed about keeping quiet. The poet appealed the readers to keep quiet, not to say even a single word. He said not to move even the hands, not to speak out anything, because when we will remain silent only, we will be able to listen our heart, will be able to follow our emotions. When the fisherman will keep quiet, when the fisherman will remain the silent, stable, still, then the whales will be saved in the sea area. When the people who are having the work of collecting the salts, when these people will remain silent, will be stable, then only they will be able to observe their hurting hands. When we will remain silent, when we will stop doing everything, then only we will be able to free from rush, the hurries and the worries. That's why the first part of this poem deals with still, peace and silence. Okay, so the next page and the further part of this poem. Students, you may keep your textbook with you. Suppose you find any kind of difficulty, you are free to ask me anytime. Okay, so the first stanza on the second page of this poem. इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि पोएट अपने रीडर्स को ये अपील करना चाहते हैं कि जब हम अपने आप को शांत कर देते हैं, स्टील कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, देन ओनली हम अपने आप की माइंड को और अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को सुन सकेंगे. जब फिशरमैन होते हैं, वो जब अपने आप को शांत कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, तभी जो सी एरिया में वेल्स होती है, बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं, उनका हंटिंग होने से हम रोक सकेंगे. जब कुछ लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो सी के पास में ऐसे सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, वो जब अपने आप को स्टॉप कर देंगे कुछ देर के लिए, अपने आप को साइलेंट कर देंगे, देन ओनली दे विल बी एबल टू ऑब्जर्व देयर हर्टिंग हैंड्स. तभी वो अपने आप के हाथ में जो चोट लगी है वो देखने के लिए वो लोग एबल हो सकेंगे. ओके, सो इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर and let's see the second part of this poem. Those who prepare green wars. Those who prepare green wars. Here it is about the war, but see students, it is not the simple war. Here it is said about the green wars. उन लोगों की यहाँ पे बात की गई है जो green wars के थ्रू लड़ाई करता है. ओके, ग्रीन वॉर्स, व्हाट इज दैट? वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. दिस इज द वॉर वेयर वी कैन फाइंड नो सर्वाइवर. इट मीन्स at the end of this war, no one will be able to survive, no one will be able to
बी अलाइव। ये इस तरह का वॉर है जिसके एंड में एक भी पर्सन जिंदा नहीं बचने वाला, कोई भी पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ ग्रीन वॉर के अंत में कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो ये किस तरह का वॉर है? वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर। इट मीन्स द वॉर दैट एक्चुअली हर्ट्स नेचुरल थिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज। ये इस तरह के वॉर की बात की गई है, हमारी एक्टिविटीज़ की बात की गई है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसे हर्ट करता है, उसे हार्म करता है और अल्टीमेटली उसे फिनिश कर देता है। सो दैट इज लेबल्ड हियर एज ग्रीन वॉर्स, दैट द वॉर्स विथ गैस and the wars with fire, because that also hurts the jungles, the forests, the greeneries, and that's why they say it here green wars. Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. It means in the shed means in the darkness, but not proper the darkness, but with the help of the trees. Under the trees we can have the shadow. In the shed doing nothing. It means let's not do anything, let's do nothing, but let's keep क्वाइट। अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चलो एकदम क्वाइट हो जाता है, बिल्कुल स्टिल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्योंकि अगर हमारी ह्यूमन बींग्स की इतनी सारी एक्टिविटीज़ है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो अर्थ है उसे बहुत तरीके से उसे डैमेज कर देता है। तो इस तरह से हम अगर शैडो के ज़रिए उसके सहारे अगर हम ऐसे खड़े रहे डूइंग नथिंग मीन्स कुछ भी ना करके अगर हम खड़े रहते हैं, इट मीन्स हम कुछ भी हार्म नहीं करते हैं। सो अल्टीमेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द होल वर्ल्ड। सो इसीलिए यहाँ पर क्वाइट रखने की बात की गई है। सो इट इज अबाउट दिस फर्स्ट स्टैंजा ऑन द सेकेंड पेज ऑफ दिस पोएम। गॉट इट? ओके, now let's see the second stanza. Okay, on the second page, what I want should not be confused. What I want should not be confused with total inactivity. मुझे जो चाहिए उसमें कुछ भी confusion नहीं होना चाहिए. The poet wants to say this thing with total inactivity. What does the poet want? The poet wants the world with total inactivity. It means no activity should be there. Why? Because if activity is going to be there, then there is possibility that people may hurt each other, people may harm one another, and people may also harm the environment, the nature, the weather, and that's why it is said that there is no confusion even. There should not be even any kind of confusion with total inactivity. मुझे क्या चाहिए उसमें कोई भी confusion नहीं है. The poet is very clear about his motives. जो poet है वो अपने motives को लेकर पूरी तरह से clear है. Totally inactivity वो चाहते हैं कि कुछ भी हमें नहीं करना है. Life is what it is about. I want to truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. If we don't have this prejudice in our mind, prejudice in the sense कि हम लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो चुकी है, हम लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है कुछ ना कुछ करते रहना. अगर हम पूरा दिन भर हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ
हमेशा करते रहते हैं, इवन अपने आप को भी ऐसी थोड़ी सी भी स्पेस नहीं देते कुछ सोचने के लिए, वेदर द थिंग इज गुड और बैड. एटलीस्ट वी शुड गिव द टाइम टू आवरसेल्व्स आल्सो टू थिंक समथिंग अबाउट. हमें अपने आप को इतना तो वक्त देना होगा कि हम ये सोच सके कि ये अच्छा है या गलत, सही है या बुरा. ओके, सो ये सोचने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए. सो दैट्स वाई वी हैव टू कीप क्वाइट. पर हमें अपनी लाइफ को ऐसे मूविंग करने के लिए इतनी सारी आदत बन चुकी है. एंड इट इज ऑल्सो अबाउट द डेथ. लाइफ में कभी ना कभी तो डेथ आने ही वाला है, पर इस तरह से जब हम अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. And for once could do nothing. At least once in a time, once in a day, a moment in a day. At least there should be some times that we should do nothing but only keeping quiet. कभी तो ऐसा वक्त होना चाहिए, कभी कभी तो ऐसा वक्त आना चाहिए कि हम कुछ भी ना करें, सिर्फ स्टील करते हो, सिर्फ स्टेबल रहते हो और सिर्फ क्वाइट करते हो. There should be peace in our minds. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. There is possibility that because of this huge silence might interrupt this sadness, because we are not happy people. See, suppose we have the facilities, all the facilities, luxury, it doesn't mean that we are happy people. For happiness, we should have peace. The peace of mind, that is the most important thing for happiness. If we have all the things, everything, but we are not satisfied, but we have not peace inside our mind, inside our heart, we won't be able to be happy. So that's why it is said that because of this huge silence, it is possibility that this silence can interrupt this sadness. इस साइलेंस की वजह से, इस शांति की वजह से ये पॉसिबल है कि ये जो हमारी सैडनेस है, हमारी ये जो उदासी है, उसमें कुछ ब्रेक लग जाए. Of never understanding ourselves. Sadness, but which kind of sadness? The sadness of never understanding ourselves. इस उदासी की जो हमने अपने आप को ही कभी नहीं समझ पाए कि हमें क्या चाहिए, वो ही हम कभी नहीं समझ पाए. We thought that actually the reason of happiness is because of luxury. हमने ये सोचा कि happiness का reason luxury होता है. We got everything, all the facilities, then also we are not happy. हमने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया होगा कि जिनके पास बहुत सी फैसिलिटीज़ होती है, हर तरह की फैसिलिटीज़ होती है, वेल्दी होते हैं, फिर भी वो लोग हैप्पी नहीं होते. दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्चुअली द रीज़न ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट द मनी, द वेल्थ, फैसिलिटी और लग्जरी. एंड समटाइम्स वी कैन फाइंड दैट a poor person is also very happy. कभी कभी हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इंसान बहुत ही पुअर होता है, गरीब होता है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है अपने से. सो इट मीन्स वी फेल्ड एक्चुअली, दैट्स आवर फेल्यूर. वो हमारा फेल्यूर है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए कि हमें लाइफ से क्या चाहिए. हम हमेशा फैसिलिटी के पीछे भागते रहे, ये सोचकर कि अगर हमारे पास लग्जरी होगी, अगर हमारे पास पैसे होंगे, अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी, लग्जरी होगी, तो हम हैप्पी रह पाएंगे. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. द पीस ऑफ माइंड, द अंडरस्टैंडिंग फॉर आवरसेल्व्स, एक्चुअली दीज आर द मेन रीजन्स ऑफ हैप्पीनेस. एक्चुअली हैप्पीनेस की, खुश रहने की असली वजह तो यही है, हमारी मन की शांति. और हम पहले तो अपने आप को समझे, तभी तो हम दूसरों को समझ पाएंगे. एंड
of threatening ourselves with death. और हम पल पल इस फियर में जीते हैं, इस डर में जीते हैं कि कब डेथ हमारे पास आ जाएगी, कब मौत हमारे पास आ जाएगी. सो दिस इज द फियर ऑफ डेथ, एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ डेथ ऑल्सो वी आर स्कैर्ड, we are sad, we are upset. But actually, the same way, birth is very common, and the same way, the death is also very common. So, we should not be afraid of these things. Next stanza. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead. Perhaps, there is not even the surety, but perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. When everything will be still, stable, peaceful and silent, it seems that actually everything is dead. Maybe that's why the earth can teach us. First, it will seem like the dead, and then after some times, it will be proved as alive. Maybe, perhaps, this earth can teach us that actually this is the life. ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद हम तो अपने आप को नहीं समझा सके, पर शायद ये अर्थ जो है वो हमें समझा सके. किस तरह से कि पहले ऐसे दिखेगा कि सब कुछ डेड है, और कुछ वक्त के बाद ऐसे प्रूव हो जाएगा कि सभी कुछ अलाइव है. इस तरह से अर्थ शायद ही हमें ये बात समझा सके जो एक्चुअली हम अपने आप को नहीं समझा सके. Now, I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Counting up to 12 means giving some time to us. We can think it and then keeping quiet. The poet says, now I will count up to 12. अब मैं 12 तक काउंट करूँगा and you will keep quiet and I will go. Means now the message has been conveyed. So you keep quiet and I will go. Now my work has been finished. I conveyed the message that I wanted to convey. Now you should keep quiet. अभी ये वक्त आ गया है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, quiet रहना चाहिए. Then I will go. So this is the poem. The entire poem deals with the message of keeping quiet. That if we want to understand ourselves, then we have to keep quiet. If we can understand ourselves, if we have the peace of mind, then only we will be able to be happy. And then we should not have the fear of death, because death is as natural as the birth. That's why we should not be scared of death. So this is the poem. I hope that you could understand this poem well. Suppose you have any kind of difficulty, any doubt, you are free to ask me anytime. Your today's homework is you have to write down the question answers from this portion. Think it out. Okay? Thank you, students. Have a nice day.